Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chal. All right. So let's start with our session. Now, one particular update which came yesterday, जिसको लेकर सब लोगों ने मेरे ख्याल से अब तक रीड कर लिया होगा. And along with that, recently Telegram approached the Delhi High Court as well, challenging the recent ban which was imposed by the government of India. ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि नीट की कंट्रोवर्सी की वजह से एंड करंटली जो सिचुएशन चल रही थी, गवर्नमेंट ने कल डिसाइड किया है कि टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को 22 तक के लिए 21 को नीट का री एग्जामिनेशन है, ठीक है, री नीट कंडक्ट होने वाला है एंड 22 तक के लिए टेलीग्राम के ऊपर बैन इम्पोज कर दिया है. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर बैन व्हिच वाज इम्पोज्ड दैट वाज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूटिलाइज किया था मेटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टेलीग्राम को बैन करने की. अब आज के हमारे सेशन का प्राइमरी पर्पस है टू अंडरस्टैंड कि बैन लगाया क्यों गया, वर देयर एलिगेशंस कि दोबारा आपका पेपर लीक हो सकता है क्या टेलीग्राम पे, क्या इस वजह से वो बैन इम्पोज किया गया, या इज देयर एनी अदर रीजन जिस वजह से अब बैन इम्पोज किया गया. And the second thing which you have to understand over here is कि what is this section 69A of the IT Act. ठीक है, तो चलो, so let's start with this particular thing. अब देखो, 3rd of May को नीट सबसे पहली बार कंडक्ट हुआ. ठीक है, 3rd of May को नीट सबसे पहली बार कंडक्ट हुआ. उसके बाद पेपर लीक के एलिगेशन सामने आना शुरू हुए. Then the government cancelled the first NEET which was conducted on 3rd of May, and subsequently it was announced by the government that the re-NEET will be conducted on 21st of June this year only. बट इस बीच में 3rd of May से लेकर 21st जून तक के बीच में प्रॉब्लम कहाँ होना स्टार्ट हुई, दैट वन थिंग, ठीक है, जो ऑब्वियसली होना ही था, दैट द स्टूडेंट बिकेम एंशियस. एंशियस अबाउट व्हाट? एंशियस अबाउट द थिंग दैट देयर माइट बी अनदर लीक दिस टाइम ऑल्सो. ठीक है, there might be another leak this time also. And one thing which started popping up on Telegram is that channels, those were kind of illegal channels, I can say. Illegal channels started popping up on the Telegram messaging app, claiming to leak the re-NEET paper, and along with that they started duping parents and student of lakhs and lakhs of rupees. तो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा था टेलीग्राम के ऊपर कि दोबारा जो नीट कंडक्ट होने वाला है उसका पेपर भी लीक करा देंगे. एंड क्योंकि इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रोकना था, दिस इज अबाउट प्लेइंग ऑन द फियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर देयर, lakhs of student over there. ठीक है, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एंग्री, स्टूडेंट्स आर आल्सो ऑलरेडी एंशियस because of the first leak, and they were worried about the same thing happening with respect to the second paper also. And यहाँ पर टेलीग्राम चैनल्स पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स आने शुरू हो गए जहाँ पर they were claiming that we will be able to provide you the new paper as well. and उस चीज के लिए उन्होंने लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए. मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलने लगा कि दोबारा पेपर लीक हो चुका है. इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को रोकने के लिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन टेलीग्राम. ठीक है, तो 22 तक टेलीग्राम को बैन किया गया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के फॉर्म में काम करने के लिए. एंड दैट इज नॉट द ओनली बैन which has been imposed by the government. 30th जून तक टेलीग्राम को ये भी चीज बोली है गवर्नमेंट ने दैट यू विल डिसेबल द मैसेज एडिटिंग फीचर ऑफ योर ऐप. कि 30th जून तक जितने भी मैसेजेस, 22 के बाद जितने भी मैसेजेस अगर वहां पर कम्युनिकेट होते हैं, भेजे जाते हैं, वहां पर मैसेज एडिटिंग के फीचर को भी आप अवेलेबल नहीं कराओ. So this is what the recent ban has done with respect to this particular app. Start कहाँ से हुआ? So NTA faced critical mandate to secure the integrity of June 21st re-examination against a wave of digital misinformation and predatory cyber scams. तो 3rd May को सबसे पहले नीट कंडक्ट हुआ, वो पेपर कैंसिल हुआ because of the allegation of leak. ठीक है, मिड जून में there were severe escalations of fraudulent activity. Open extortion networks emerged on digital messaging platforms targeting candidate anxiety. And 21st June को scheduled date है for the highly sensitive NEET re-examination and immediate intervention required to preempt manufactured
लीक्स। चल क्या रहा था, तो फ्रॉडुलेंट चैनल्स पॉपअप होना स्टार्ट हो चुके थे। So bold channels openly advertising illicit intent, including paper leak, NEET, re-NEET 2026, private mafia. And demand क्या थी? Messages requesting upfront sums ranging from few thousand to several lakhs of rupees, and the promise to perpetuate access to secure June 21st re-examination paper via attached document. इस तरीके की चीजें होना स्टार्ट हुई। So findings गवर्नमेंट की ये थी that fraudsters operated openly exploiting candidate anxiety to build lucrative extortion networks ahead of the re exam. और ये एक प्रॉब्लम होती। तो स्कैमर्स क्या illusion क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके थे that they possess the highly secure 2000 or June 21 question paper ahead of the time, and PDF files were circulated online rapidly as definitive proof or pre-examination leak. And the administrators of these channels started posing as whistleblowers, aiding desperate students against an unfair system. Government का कहना फिर ये था that NTA officially confirmed that paper was available. There no paper was available outside the secure examination chain, and अहमदाबाद में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, अहमदाबाद में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, एंड द अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस arrested operators from Rajasthan and confirmed that the duo possessed zero leaked documents. तो ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ने स्टार्ट हो चुके थे, साइबर क्राइम जो कमिट किए जा रहे थे टू ड्यूप द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ लैक्स ऑफ मनी, इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और इस पर्टिकुलर साइबर ऑफेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट यूटिलाइज्ड इट्स पावर, और द सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइज्ड इट्स पावर अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट टू बैन द टेलीग्राम। और दो तरीके के बैन यहाँ पर इम्पोज किए गए कि 22 तारीख तक प्लेटफॉर्म पे मैसेजिंग ही नहीं होगी, और 30 तारीख तक 30 जून तक मैसेज एडिटिंग का फीचर भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन 69A? Section 69A primarily empowers the central government to intercept and restrict public access to digital data across any computer resource. ठीक है, आपके मैसेजिंग को ब्लॉक करना, आपकी एप्स को ब्लॉक करना, वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, इंटरनेट को शट डाउन करना, ये सारी की सारी पावर्स गवर्नमेंट के पास आती है सेक्शन 69 के थ्रू। So section 69A actually empowers the central government to intercept and restrict public access towards anything, any digital data which is available on a computer source. So central government issues directions to block access to anything or any content which is generated, transmitted, received, stored or hosted on internet. Now this particular section allows the government to suspend the internet as well, and this section also allows the central government to ban a particular app, website, search engines and so on and so forth. But when you are restricting this particular kind of a thing, when you are restricting the transmission of messages or transmission or publication of any data, that is kind of an interference with respect to Article 19(1)(a) of the Constitution of India. ठीक है, क्योंकि every citizen of this country is having a freedom of speech and expression. Every citizen of this country is having a freedom of speech and expression. एंड जब भी आप कंटेंट टेक डाउन का ऑर्डर पास करते हो, या आपको ब्लॉक करते हो, या वहां पर इंटरनेट का शटडाउन ऑर्डर करते हो, दैट इज समथिंग इट इज इंटरफेयरिंग विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी आर्बिट्ररीली डन. Section 69A also mentions the ground on which such a blocking order can be passed. ठीक है, वो वहां पर उन ग्राउंड्स को भी मेंशन करता है जिसके बेसिस पे आप इस तरीके का ब्लॉकिंग ऑर्डर पास कर सकते हो. So, according to Section 69A, the blocking powers conferred under Section 69A cannot be exercised arbitrarily, and they are strictly bound to 5 legal grounds. 5 grounds पे आपका blocking order पास हो सकता है: sovereignty and territorial integrity of country, defense and security of the state, friendly relations with foreign state, issues of public order, and investigation purposes. Investigation purposes में incitement to commission of offense and investigation of any cognizable offense. इन सिचुएशन में कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर पास किया जा सकता है.
So this cannot be exercised by the government arbitrarily. There are limited grounds which are mentioned under section 69A, and according to only those grounds, the government is authorized to block the content or block any particular application or search engines, etc. Point is that this particular order is issued by the government against a particular intermediary. But किन किन चीजों के अगेंस्ट यहाँ पर ऑर्डर इशू किया जा सकता है? So the legal definition of an intermediary spans the entire architecture of internet from core infrastructure to end user access points. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर इशू किया जा सकता है इंटरनेट बैन करने के लिए, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, वेब होस्टिंग सर्विसेज, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑक्शन साइट्स एंड मार्केट प्लेसेस, साइबर कैफे, इन सारी एंटिटीज के अगेंस्ट यहाँ पर ऑर्डर पास किया जा सकता है। कि मान लो सर्च इंजन को ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, दिस वन बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर सर्च इंजन, तो सर्च इंजन को ऑर्डर पास कर दिया जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज सपोज्ड टू बी ब्लॉक्ड। तो इस तरीके से इस एंटायर इकोसिस्टम के अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर पास किए जा सकते हैं सेक्शन 69A के अंडर। बट दिस इज अबाउट द इंटरफेरेंस, और दिस इज अबाउट एन इंटरफेरेंस बीइंग कॉज्ड विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, एंड देयरफॉर प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी इज इक्वली रिक्वायर्ड ओवर देयर। आप आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी के हिसाब से, विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से उस चीज को नहीं कर सकते। प्रॉपर प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड ओवर देयर, and therefore the law mandates the strict operational procedure to ensure accountability in the exercise of the blocking order. तो सबसे पहले identifying a threat that corresponds strictly to the section 69A grounds. ऑर्डर सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर पास किया जा सकता है, ब्लॉकिंग ऑर्डर उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर पास किया जा सकता है which are mentioned in section 69A of the IT Act. Then the core transparency mechanism is that any request for blocking access must be justified with reasons recorded in writing. आपको writing में order pass करना होगा, आपको reasons बताने होंगे that why the particular blocking order has been passed against a particular entity. And then the formal directive is transmitted to the agency or the intermediary for immediate execution. तो writing में होगा, proper process follow होगी, उसके बाद ही कहीं जाकर आप वो ब्लॉकिंग ऑर्डर पास करवा सकते हैं। और देखो, because the intermediaries over here are a third party in the sense they are not generating the content, they are actually working as a conduit, working as a mechanism through which a person posts or publishes his content on the internet, and therefore the general rule is that the intermediaries are not made liable for a third party generated content. एंड इसी को हम सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कहते हैं, दैट दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अ थर्ड पार्टी जनरेटेड कंटेंट, बट intermediaries get the safe harbor protection so long as they follow due diligence, so long as they are abiding by the lawful directives of the orders of the courts or the government, तभी उनको ये safe harbor protection मिलता है। So, total compliance with section 69A blocking directions legally insulates the intermediary from secondary liability. कि as long as वो blocking order को follow कर रहे हैं, तब तक उनके पास safe harbor protection रहेगा and they will not be held responsible for the same thing as well. So currently जो Telegram के against ban issue किया गया है, that has been issued by under section 69A, and that is something that is important from the purposes of your paper. ठीक है, बाकी the Great India GK Tour is going on. ठीक है, registration is free, wherein this time it is 10 times grander, better and much more informative. So you can register for the same for absolutely free. The link is given in the description box. The next thing is that YouTube schedule is pretty much important, जहाँ पर आपके जीके और करंट अफेयर्स के लिए आपको और करंट लीगल नॉलेज के लिए आपको इन चीजों को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, लाइक योर हिंदू एनालिसिस डेली एट 9 AM, बिग न्यूज Thursday at 6 PM, Indian Express explained every Friday at 7 PM, and weekly legal affairs every Monday at 5:30 PM. Along with that, the CLAT Toppers Tour is also going on right now, okay, wherein you get a chance to interact face to face with the last year's topper of your CLAT examination. इसका limited seat है, यहाँ पे भी registration mandatory है, so you can register for the same and the link is provided in the description box. So I hope the topic is clear to everyone. Okay, now Telegram has decided to challenge the ban in Delhi High Court. Let's say अब आगे इसमें क्या होता है, but as of now the app is banned till 22nd of June and the message editing feature of the app is disabled till 30th of June. ठीक है, so that's it for today. I hope the topic is clear. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet soon guys. All right, thank you so much everyone, thank you so much guys, thank you so much.